हम सब ये शपथ लें कि हम सेंसर बोर्ड बोलना बंद कर देंगे, बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन बोलना शुरू करेंगे। ये शपथ ले लो यार। Cheers to all of us and to announce that Urta Punjab is coming on the 17th. The verdict is bigger than just about one individual because the verdict says that your job is to certify and not to censor. And the moment that body knows its responsibility, which has been correctly defined, I don't think we will be needing to go to the court all the time. And I think that's the more important thing. Our battle was that we do not need to go through this rigor and this problem every time we're putting a film out there to be certified. And we don't need to go through censorship. हम सब ये शपथ लें कि हम सेंसर बोर्ड बोलना बंद कर देंगे, बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन बोलना शुरू करेंगे। ये शपथ ले लो यार। Let's start at least by calling it correctly. When I heard about the cuts that were suggested, my first question was to my father, but why and how? But it does not make sense. I was not able to understand. And my father, as Shahid mentioned, there have been people who have fought this and been way mature. My father has been fighting this since the longest time. And he looked at me in a way that, Alia, it is something that happens, but go to the court, fight it, and you will come out feeling very feeling happy because they will always be on your side. And he was very sure about that. Coming back to again the statement that Shahid made, that you don't know how happy I was yesterday when I got that SMS that we have passed Urta Punjab with A certificate with one cut. I was so delighted. Actually here feeling very proud and very happy about what has happened yesterday. And I think the honorable bench has given a decision which I have huge respect for. I actually even appreciate the one cut that they have given. I appreciate it. Although from a personal point of view, I would have wanted this film to pass without any cuts. And the shot that has been cut is mine. जिस इंटेंशन से ये मूवी बनाई गई है, मूवी आएगी तो डेफिनेटली अवेयरनेस तो आप अभी देख रहे हो कितनी पूरे वर्ल्ड में बात हो रही है। मेरे फ्रेंड्स हैं कनाडा, यूएस, इंग्लैंड, तो सब जगह रेडियोस पे ये सब बात हो रही है। तो अवेयरनेस तो डेफिनेटली मुझे लगता नहीं कि दो राय है, अवेयरनेस तो आएगी ही आएगी। और जितनी शिद्दत से ये फिल्म बनाई है, सब लोगों ने काम किया है, definitely मुझे लगता है। I stand by the data that the government and AIIMS has provided regarding this matter. In the film, the context was that it was a particular character's point of view. And since then, we have taken note of the fact that people might take umbrage to it, and we rectified it. Battle is far from over. Urta Punjab, yes. We fought and there was such amazing support this time. The support came starting with Ekta, to Phantom, to the distributors, to the industry, to all of you people. So I think, this wouldn't have possible if everybody did not support it and believe in the fight. There are some people who doubted our intentions. Some people said that we are doing it for publicity. Some people said we have some political affiliations. We have kept quiet through it all because we believed in our fight and everybody was one. And I don't think there is okay, voice probably was mine, but I think everybody was behind me. Otherwise, I would not have gone out there and did all that. And I've not seen this kind of a support. And I feel somewhere, yes, a lot of smaller films are facing that. I read about 2 films this morning. We need to change the system. And I think Mr. Jetli has made a statement in regards to that. Mr. Rajyavardhan Rathore also said something in regards to that. And they have made us believe that it will happen soon. But the way they have said, we are hoping it will happen this month. Obviously, we have humongous problems with Mr. Nilani. But if he goes, who will come in? And what is the guarantee that someone that comes in will not interpret the existing Cinematograph Act and the law the same way? Or maybe worse or maybe better way. The thing is, the whole system needs an overhaul. The whole system needs an overhaul. Not just Mr. Pella Nilani needs to be replaced, which we want to, but the whole system needs an overhaul, and I think we as an industry should fight for it because it's about all the other films too in the future. When I heard the script, I felt worried. I felt worried for my brother, I felt worried for my family, I felt worried for the youth at general. If this is an issue that can strike them, then an honest film about that should be made. A film that doesn't try and color it nice and pink and blue and green and yellow, which is what we do most of the times as actors. We try and show people the beautiful side of life. But if we only keep staring at the beauty, we will forget the issues that can lie in front of us, which we have to fight. Real life is very different. And here was a film that was talking about a very real issue, which is an issue for everybody. I don't think it's an issue for any particular area or set of people. It's a general issue, but every film has to be based against some backdrop. And here was a film which was
honestly trying to express itself and say, listen guys, this is a problem. These are the people who are suffering from it. See what happens to them. Don't become one of them. Fight it. We went to the court because we did not get the letter that officially allowed us to go to the tribunal. We were not allowed to go to the tribunal, is why we went to the court. And by the time we were given the letter, Justice Mahajan, who was heading the tribunal, was on leave. So that's the reason why we went to the court. Of course, we would have gone to the tribunal if we got the letter. When the whole thing kind of erupted, before even we spoke, I don't think anyone from either Balaji or Phantom was even talking to the media, because we just wanted to release our film. We only wanted to get our certificate properly and release our film. So we kept away, because all the rumors and everything, where it was coming out from, who was talking about it, how many cards, we don't know. So when the thing happened, when it went out of the hand, we realized we are not getting the letter. Yes, I started to get calls, and I very vehemently and very clearly said, stay out of it. Can you tell us who? No, I won't. We very clearly and very vehemently I asked them to stay out of it. And the moment I got my first call is the moment I went on Twitter and put up a tweet to ask people to very clearly stay out of it. मुहिम चली हुई है, वो मुहिम बहुत सालों से हम लोग कर रहे हैं. And I think कहीं ना कहीं सबको भी ये रियलाइजेशन हो रहा है, वो हम लोग कर रहे हैं, वो चीज़ें हम कर रहे हैं. लेकिन कई बार क्या होता है कि इसी गाइडलाइंस में हमने वासेपुर भी रिलीज़ की, इसी गाइडलाइंस हमने देवटी भी रिलीज़ की है. हमें इस तरह की कभी दिक्कतें नहीं आई. और जब भी हमें लड़ना पड़ा, जैसे कि मैंने ब्लैक फ्राइडे में भी लड़ाई की, हम लोग ने कही, वो एक हमेशा फेयर फाइट थी. आपको एक रीज़न दिया जाता था, आप उस रीज़न से, उस इंटरप्रिटेशन से लड़ते थे. आपको जो लड़ने का ग्राउंड भी था वो भी बहुत फेयर था. ये जो था ये थोड़ा सा गड़बड़ था. यहाँ पे आपके पास वो है ही नहीं. मतलब आपको एक तरफ बोला जा रहा है, दुनिया आपको बोल रही है आपकी फिल्म बैन होगी, दुनिया आपको बता रही है क्या कट्स हैं. हाँ, आपको कान में बोले जा रहे हैं, लेकिन आपके पास कागज़ नहीं है. आपके जब कागज़ नहीं, आप करोगे क्या? हमसे ये बहुत ही ये फाइट वैसी फाइट नहीं थी. मतलब हर बार मैंने लड़ाई की है और कभी आके इस तरह की चीज़ें हुई नहीं. ये एक पूरा एक थोड़ा सा ये पावर गेम था. ये ऐसा, और इस तरह का इंटरप्रिटेशन पहले कभी नहीं देखा मैंने. तो मेरे को अभी आप बोलिए, मैं 2 साल पहले जो मैंने फिल्म बनाई, अभी बनाने से आदमी डरेगा जिस तरह से पिछले 2 साल से हो रहा है. सो ये ऐसा नहीं है. ये लड़ाई, हाँ, गाइडलाइंस की जहाँ तक की बात है, ये सिनेमेटोग्राफ एक्ट बहुत पुराना है और बासी हो चुका है. उसको रीलुक करने की ज़रूरत है, उसको अमेंड करने की ज़रूरत है. वो 100% है और उसके ऊपर काम भी हुआ है. आई थिंक रिपोर्ट भी सबमिट की जा रही है. श्याम बेनेगल से इस बारे में आपकी कुछ बात हुई है आप लोगों की कलेक्टिव वे में? हम लोगों को सी, when his committee is doing a report, we can ask him क्या हो रहा है, and he will say हो रहा है, भी एक और रिपोर्ट करनी बाकी. उससे ज़्यादा वो भी नहीं कह सकते, कोई नहीं कह सकता. उनकी अपनी एक बाउंड्रीज है जिनको हम फोर्स नहीं कर सकते, और वो बहुत सीनियर भी हैं. We all think he's the right man to be there. And he's the right man who has right amount of experiences. So whatever he'll submit will be in the favor of cinema. The idea of what screamed out about this character to me was not that she was a Bihari or that she was in a Punjabi or whoever she was the issue and the condition and the state that she was in. So that's what screamed out to me, as opposed to how much Bihari or how much of the language, I know Bihari is not a language, but how much of the dialect I picked up from Bihar and Punjab and how convincingly I pulled it off. I think that only Abhishek Chaubey can answer. But I can definitely say what I took away from this character was far more disturbingly pleasant and far more advanced and ahead of just the fact that she belongs from Bihar. All the controversy has been created without the film even being viewed. Please see this film. There are some sensible people sitting out here who must have thought something adequate. Our images, our names are at stake. Why would we do that to ourselves, if not to you guys? You know, give some credit to this girl sitting out here who is known to be this beautiful, desirable, lovely heroine, youth icon who probably has 20 endorsements, who has the courage to go and play the character of a drug addict. Why is she doing that to her image? Because there's some substance within her which is making her feel responsible enough to pick a role that's not just about her looking pretty and desirable, but it's a role which is real and which talks about issues that necessarily we don't suffer, but we believe they need to be spoken about. मैंने आंखें देखी है और मैंने शोला और शबनम देखी है. मैं कॉलेज में था और मैंने दोनों ही फिल्में, मुझे मजा आया था. मैं गोविंदा का फैन रहा हूँ, ठीक है. सो आई विल नॉट सिटिंग हियर इन द जजमेंट. हाँ, और दूसरी चीज़ ये है
कि अगर मुझे लगता है कि मैं एक रियलिस्टिक फिल्म बना रहा हूँ और मेरे बगल में अमन गिल बैठा है, बोलता है मुझे यार ये तो तुम्हारी फिल्में नहीं समझ में आती, मुझे तो ये सेक्स समझ में आता है। वो तीसरा बोलता है मुझे सिर्फ वायलेंस समझ में आता है। तो मतलब वो लड़ाई जो हम तीनों की हक की लड़ाई एक ही है। तो मैं यहाँ पे ऐसा बैठ के उसको जज नहीं कर सकता हूँ। मुझे मेरा कितना भी आर्ग्यूमेंट हो किसी के साथ, वो पर्सनल लेवल पे मैं बोलूंगा कि हाँ मेरी जो सेक्स कॉमेडी जो हमने हंटर की थी वो ज्यादा रैशनल है, और तुम्हारी जो सेक्स कॉमेडी है वो वाहियात है। वो हमारी लड़ाई है, वो रहेगी, लेकिन रिलीज करने का और बाहर अपनी बात कहने का हक दोनों को उतना ही है, बराबर है। तो वो जो चीज है आई थिंक वो हमें बंद कर देना चाहिए। हम अगर पहलाज निलानी के इंटरप्रिटेशन से हमें दिक्कत है तो हमें अपनी दिक्कत वहीं तक सीमित रखनी चाहिए। उन्होंने पास्ट में क्या फिल्में बनाई हैं, इतनी मास में जाके लोगों ने देखी हैं, तो कहीं ना कहीं उस फिल्म ने कुछ तो एंटरटेन किया है किसी को। तो फिर हम अभी बैठ के रिट्रोस्पेक्ट में अपने आप को इतना सुपीरियर क्यों बन जाते हैं कि अरे उन्होंने देखो क्या किया था। मेरा उनका प्रॉब्लम अभी से है, अभी उनको क्या हो गया। हमने किसी के खिलाफ जद्दोजहद नहीं की, हमने सिर्फ अपनी फिल्म के हित के लिए जद्दोजहद की और किसी के लिए नहीं की। ये चीज होती ब्लैक फ्राइडे के साथ तो मैं कह सकता कि पब्लिसिटी का बजट नहीं था उस समय, ठीक है। इस फिल्म में पब्लिसिटी का बजट था हमारे पास हमें नहीं मालूम हमारी फिल्म आ रही कि नहीं आ रही है। ये चीज में कहीं ना कहीं सच्चाई थी जो इस चीज एक सुनामी की तरह बन गया था। आई थिंक जो 4 दिन जो उड़ता पंजाब का और चारों तरफ चल रहा था, वो कहीं ना कहीं एक सच्चाई थी जो लोगों तक पहुंची। और अनफॉर्चुनेट है कि कोई इसको पब्लिसिटी कहता है, बिकॉज मैं एक आदमी मैं तो वैसे भी दूर भागता हूँ। पहले दिन भी जो चालू हुआ था बोलना, वो तो जबरदस्ती पकड़ लिया गया था मैं। तो इफ आई हैव माय वे आई वुड रादर स्टे अवे फ्रॉम। फिल्म चूज करने का मेरा एक ही कारण था कि ये पंजाब की पिक्चर थी। मैं एकदम से आके कोई मराठी पिक्चर के बारे में बोल रहा हूँ या कोई हिंदी लैंग्वेज के बारे में बोल रहा हूँ तो वो फेयर नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ से रिलेट नहीं करता। तो पंजाब की पिक्चर थी और पिक्चर अच्छी लिखी हुई है। और बाजी ने जैसे मुझे सुनाई अभिषेक सर ने, तो मुझे लगता है कि ये मेरा बेस्ट मुझे लगता है डेब्यू होना चाहिए। कल किसी ने ट्वीट भी किया था कि फाइनली वेलकम टू बॉलीवुड। सो क्योंकि कल वर्डिक्ट आया, सो नो डाउट मेरा एक ही कारण था कि ये फिल्म पंजाब से जुड़ी हुई है, इसीलिए मैंने पिक्चर की।